Assalamualaikum. Dear students, welcome back to our channel MCQs platform. Today we have brought 20 solved MCQs of Islamiat which are taken from the past paper of Assistant Director FIA 2011. These questions of past papers will give you ideas that how examiner asks the questions and which areas you should cover for Islamiat for upcoming exams of Assistant Director FIA. So let us move to learn 20 important MCQs of Islamiat of FIA Assistant Director 2011. First of all, I will give you some instructions about these past papers. You may practice these MCQs at mcqsplatform.com. यही MCQs आप इनको क्विज फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट MCQs प्लेटफॉर्म पे. If you revise these MCQs thrice before exam, you can easily qualify Islamiat portion of paper not only in FIA but in other one paper based exams. अगर आप 3 मरतबा इन MCQs को प्रैक्टिस करते हैं पेपर से पहले तो आप ये इस्लामियात का पोर्शन ना सिर्फ FIA असिस्टेंट डायरेक्टर में क्वालिफाई कर सकते हैं बट जो कि वन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे टाउन ऑफिसर हो गया, म्यूनिसिपल ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर FIA हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर इन IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो गया. तो सारे जो भी वन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं उनमें आप ये अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं. These MCQs are taken from the past paper of FIA 2011. याद रहे ये जो इस्लामियात के 20 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, ये वो 20 क्वेश्चंस हैं MCQs हैं जो कि 2011 से लिए गए हैं और यही पास्ट पेपर है. ठीक है ना. तो अब आगे के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आगे हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आपको अंडरलाइन शक्ल में मिलेगा. तो हर क्वेश्चन के बाद 5 से 10 सेकंड का टाइम होता है. उसके बाद उसका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने अंडरलाइन किया जाएगा. तो मुझे उम्मीद है आपको ये 20 इम्पॉर्टेंट MCQs आगे आने वाले FIA या किसी भी वन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम में काम आएंगे. तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. तो शुरू करते हैं आगे आपके 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इस्लामियात ऑफ FIA 2011.